Dear Hind children, in this video we will discuss chapter depreciation, provision and reserve. But first of all we will discuss about what? Depreciation. Okay. So as you all know the meaning of depreciation, when we use any asset continuously, so its value starts reducing. That is known as depreciation. It means fall in the value of financial value of any asset is generally known as what? Depreciation. So it is defined as the gradual and permanent decrease in the value of asset due to its regular use, constant use, or the afflux of time, or because of any accident or the abnormal causes. Right? So that is depreciation. Now, the similar terms which are also meant depreciation. The term depreciation we use for the fixed assets, but in case of the natural resources like rivers and coal mines and diamond mines, oil wells, we use the term what? Depletion. क्योंकि आप इनसे extract करते जाओगे, the more and more you will extract, so definitely the natural resources also decline. Deforestation, like forest, जितने पेड़ कटते जाएंगे डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, so that is also what? Depletion. Okay, so decrease in the value of natural assets, we use the term depletion. Now amortization, as we use the term depreciation for the tangible asset, we use the term amortization for intangible assets like patent, copyright and trademark. These assets come for a certain period of time and then after that we need to renew them. So जो धीरे धीरे इनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जो टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है, सो दिस इज नोन एज व्हाट? amortization. Now the next is causes of depreciation. What are the basic causes of depreciation? So the basic cause of the depreciation is wear and tear. Constant use of any asset may result in its the decrease in the value of its financial value. So that is what? Normal wear and tear. हम continuously use करते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगती हैं. So in case of machinery, furniture और any, आप अपने घरों में भी देखते होंगे home appliances जो होते हैं, यूज होते होते क्या होने लग जाते हैं? खराब होने लग जाते हैं. So this is what? Because of their constant use. This is normal wear and tear. अब हम आते हैं causes of depreciation. Point number 2, expiration of legal rights. Like in case of intangible assets like patent, copyrights and lease. These are comes for a specific period of time और जैसे जैसे वो time खत्म होता जाता है, their value reduces. So expiry of legal rights. लाइसेंस है, लाइसेंस भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बनता है, ठीक है, एंड एज दैट टाइम पीरियड एक्सपायर्ड वी नीड टू रिन्यू इट. मतलब उसके लिए जो वैल्यू हमने खर्च की थी वो अब खत्म हो गई है. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. अब हम आते हैं causes of depreciation. Third point, that is obsolescence. As you can see on the screen, the typewriter is there. So typewriter is not used nowadays because we are typing on computers. Now that facilitates us more than the typewriter. So जब इनका ये आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, तो भाई अभी हमारे किसी काम की नहीं है. सो इफ एनीवन हैज टाइपराइटर, वो अगर उसको बेचने भी जाएगा तो कोई वैल्यू उसकी नहीं मिलने वाली है उसको. सो ड्यू टू द चेंज ऑफ फैशन, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी, some assets became outdated and that is the reason of depreciation. The fourth is abnormal factors. As you can see in the pic, the car is sinking in the water. So जैसे कि फ्लड्स हैं, नेचुरल क्लैमिटीज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, है ना. ये जब होते हैं तो आपकी एसेट्स खत्म हो जाती हैं, बिजनेस जो है डैमेज हो जाती हैं, चीजें हमारी एसेट्स खराब हो जाती हैं, बट वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम. सो दैट इज एबनॉर्मल फैक्टर्स एंड these are also causes great loss. देन द पैसेज ऑफ टाइम. अगर कोई कंटिन्यूसली रखी हुई है कोई चीज, तो अगर आप उसको बहुत समय बाद इस्तेमाल करते हो तो पता चलता है वो खराब हो चुकी होती है. तो सम टाइम्स अगर चीजों को रेगुलर यूज ना किया जाए, उनका मेंटेनेंस ना किया जाए, तो वो रखे रखे भी खराब हो जाती है. स्पेशली व्हीकल्स, है ना, और घर के जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं. मैं आपको दोनों एग्जाम्पल देती जा रही हूँ. सो a flux of time, this is also a reason of depreciation. Now let us summarize the causes of depreciation. So wear and tear, जो हम लगातार यूज करते रहते हैं. Then expiration of legal rights, तो धीरे धीरे टाइम पीरियड उनका खत्म होने लग जाता है. And obsolescence, when the things become or assets become outdated. Abnormal factor, natural calamities are abnormal factors. चोरी है, आग लग गई है, these are also abnormal factors. And the passage of time, sometimes एक स्पेसिफिक टाइम बीतने के बाद वो चीजें खराब होने ही लग जाती हैं. दैट इज द अफ्लक्स ऑफ टाइम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जब चीज खराब हो रही है तो हो ही रही है, वाई वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बट इन बिजनेस हम अपने घरों में तो नहीं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, बट स्टिल वी कीप द थिंग्स इन टू द माइंड कि रेफ्रिजरेटर 15 साल बाद खराब हो जाएगा, उतना ही चल पाएगा, तो 15 साल बाद रिप्लेस करना है उसको, हम ये दिमाग में तो रखते हैं, बट हम अलग अलग फंड क्रिएट नहीं करते कि रेफ्रिजरेटर के लिए अलग फंड क्रिएट कर लिया, टेलीविजन के लिए अलग फंड क्रिएट कर लिया, बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर हाउस, बट इन बिजनेस there are also several assets, but बिना assets के तो business चलेगा नहीं, and to replace assets you must have funds. So to replace assets into the future we need to keep provision for the same. कितने अमाउंट का प्रोविजन करें आखिर, और दूसरी एक बात ये कि आपको अपनी एसेट की वैल्यू की रिकवरी भी लेनी है अपने ही बिजनेस से, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. सो द फर्स्ट पॉइंट, मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू. You all have studied matching concept in the chapter 3 theory basis account. What does it mean? I hope you all remember that a business must earn that much revenue so that it will be able to cover its cost. आप इतना तो कमाओ कि अपने खर्चे निकाल सको. Only then the survival can be ensured. So to calculate the cost of the business, the depreciation एक ऐसा खर्चा होता है बच्चों जिसके लिए nothing is paid. It is there, है ना, इनविजिबल है, वो किसी को दिख नहीं रहा है पर वो हो रहा है, आपका नुकसान होता जा रहा है पर वो दिख नहीं रहा है. So we need to estimate कि हमारी asset कितनी घिस गई, so that we can calculate or we can charge that amount against the profit, to calculate the correct amount of profit also and to calculate the correct amount of the cost also. Okay, so to fulfill the requirement of the matching concept we need to calculate depreciation. And then this is the point, matching cost and revenue. Second point is consideration of tax. Tax is calculated on the income. If we do not deduct depreciation from the income, our income will be more. Then we have to pay the more tax on the income. तो जो टैक्स है वो लीगली डिडक्टेबल होता है, सॉरी डेप्रिसिएशन जो है दैट इज लीगली डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट्स टू कैलकुलेट टैक्स. That's why there is a need to calculate depreciation so that actual amount of tax can be calculated. अब आते हैं ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पे. भाई आपकी एसेट्स घिस रही हैं बट यू आर नॉट शोइंग द डेप्रिशिएटेड वैल्यू और द बुक वैल्यू इन योर बुक्स. आपकी बुक्स में अभी भी एसेट्स अपनी वैल्यू उन वैल्यूज पर दिखाई दे रही हैं जो एक्चुअली उनकी करंट वैल्यूज नहीं है, एंड आइदर यू हैव नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन आल्सो. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फेयर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस. आप उन चीजों को बढ़ा के दिखा रहे हैं. दूसरी बात कि इफ यू आर नॉट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, आपका प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आ रहा है लेकिन आपको लॉस हो रहा है और आप उस लॉस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो इन दिस केस द बिजनेस इज नॉट शोइंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन. टू रिटेन फंड फॉर रिप्लेसमेंट, फिर वही बात आ गई, वी नीड टू रिप्लेस एसेट्स इनटू द बिजनेस, क्योंकि बिना एसेट्स के बिजनेस नहीं कर पाएंगे, एंड टू रिप्लेस देम वी नीड फंड. सो इट्स बेटर कि जब जब तक आपकी एसेट आपको काम दे रही है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर एसेट आप उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लें. बट हाउ मच अमाउंट वी नीड टू keep out from the profits. So to calculate that we are calculating depreciation. Let us take a simple example कि आपने कोई एसेट 10,000 रुपए की खरीदी है और उसकी जो लाइफ है वो 10 साल है. सो डेफिनेटली इफ यू कलेक्ट और इफ यू keep 1,000 rupees apart from your profit every year, तो after 10 years आपके पास 10,000 रुपए की रिकवरी भी हो जाएगी, and that amount will help you to replace the asset also after 10 years. Then the next point is compliance with law. According to Companies Act 2013, it is compulsory to provide depreciation on fixed assets for the joint stock companies. Now let us do the summary. So the first point is what? Matching the cost and revenue concept. Matching concept को fulfill करने के लिए there is a need to calculate depreciation. Then to calculate the exact amount of tax to be paid to the government, we need to calculate depreciation. After that, true and fair financial position. अगर आप नहीं दिखाएंगे depreciation, so you are in loss, but your statement, your financial statements are not showing the correct picture of your business. So to show the fair picture of the business, we need to calculate depreciation. Then to retain funds for replacement. तो आपको एक समय के बाद जब एसेट खराब हो जाएगी, you need to replace. So it's better to collect fund during the lifetime of the asset. So we calculate depreciation. Then to compile with law, we calculate depreciation. So I hope you understood the need for charging depreciation. So what we discussed in this video, need for charging depreciation, while we calculate depreciation basically, and the similar terms of the depreciation and the
causes of depreciation. I hope you remember. Let us have a quick recapitulation. So, need for depreciation we have done. Then, before that, we did what? The causes of depreciation. And before causes of depreciation, we discussed the similar terms of depreciation, which is amortization in case of natural resources, depletion in case of tangible asset. We use the term depreciation. So I hope you understood these three topics: the similar terms of depreciation, need for calculating depreciation, and the causes of depreciation. The other topic we will discuss into the next video. तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से. जय हिंद. टेक केयर.